वेलकम टू मुनीर अलाइव रिएक्शंस। मेरा नाम मुनीर अलाइव है और मैं एक पाकिस्तानी हूँ। आज मैं जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन और रिव्यू देने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है और इसके बारे में काफ़ी कुछ पहले से काफ़ी देर से सोचता रहता था कि ऐसा क्यों है। टाइटल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ऐसा क्या मैं सोचता रहता हूँ। वो ये है कि वाई सो मैनी CEOs आर फ्रॉम इंडिया। यानी कि मैं सोचता हूँ कि ट्विटर हो गया, गूगल हो गया, हर एक बड़ी टेक इंडस्ट्री की जो टेक ऐप्स हैं, वेबसाइट्स हैं या सोशल मीडिया है, उसके CEO ज़्यादातर इंडियंस ही क्यों हैं। इसमें कई दफ़ा हम जेलस भी फील करते हैं कि पाकिस्तानी भाई किधर हैं, तो इंडिया ही से क्यों है। काफ़ी कुछ मुझे पता है कि ऑब्वियसली हर कोई अपनी मेहनत से आता है, किसी मेरिट से आता है, कोई सिफारिश के ज़रिए तो आता नहीं है। तो हर कोई इंडिविजुअल अपनी मेहनत के ज़रिए वहाँ तक पहुँचता है, जॉब करके अपने प्रोफेशन को बेहतर से बेहतर करते हुए, अपनी स्किल्स को बेहतर करते हुए और मेहनत से स्ट्रगल करते हुए उस पोस्ट तक पहुँचते हैं। तो इसमें मुझे उम्मीद है कि काफ़ी कुछ फैक्ट्स बताए जाएंगे, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जो कि मुझे एज़ अ पाकिस्तानी में मुझे जान के खुशी होगी और तमाम पाकिस्तानियों को जान के खुशी होगी कि आप भी, हम भी इनके नक्शे कदम पर चलते हुए अच्छी पोस्ट पे जा सकते हैं एज़ अ इंडिविजुअल और एज़ अ कंट्री भी। कैसे इंसान तरक्की करता है, कैसे कर सकता है। तो ये जो वीडियो है, जिस यूट्यूब चैनल की वीडियो, उस यूट्यूब चैनल का नाम है न्यूज़ थिंक। तो आइए सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं। उसके बाद मैं एज़ अ पाकिस्तानी अपना रिएक्शन और रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगा। Google, Adobe, Microsoft, and IBM are all run by people who grew up in India. The latest to join these ranks is Twitter CEO Parag Agrawal, who took over from Jack Dorsey. People originally from India make up 1% of the total US population, yet about 6% of Silicon Valley's workforce. So, why are there so many tech CEOs who hail from India? When Satya Nadella took over as CEO of Microsoft in 2014, the company was in bad shape. Bill Gates was reportedly an angry and difficult boss. His successor, Steve Ballmer, apparently wasn't any better. Microsoft was also a dinosaur. It had failed to innovate. For example, it lost the smartphone battle to Apple. Along comes Nadella, an engineer who rose through the ranks of Microsoft to become the CEO. Nadella changed the culture of the company. He made it clear anger and yelling weren't welcome. He also sought to make Microsoft relevant. We now need to make Microsoft thrive in a mobile-first and a cloud-first world. Under his direction, Microsoft moved its software to non-Windows devices and expanded its cloud business, Azure. That innovative spirit of problem-solving was bred in his native country. India is home to nearly 1.4 billion people. It's the second most populous country on Earth after China and is expected to overtake China as the most populous country in a few years. Although India has made remarkable progress, poverty is still a major challenge. Nearly a quarter of the population lives below the poverty line of $1.90 a day, according to the United Nations Development Program. They face corruption, poor infrastructure, and limited opportunities. So they learn to be resilient, adapt, and overcome endless obstacles. This leads them to be problem solvers, a key asset in any corporation. Sundar Pichai has had to solve many problems after taking over at the helm of Google in 2015, at a time when big tech is being scrutinized over the power they hold. He became the archetype of a kinder, calmer, gentler leader in tech. Pichai earned an engineering degree at one of the Indian Institutes of Technology. The IITs are kind of like the Indian equivalent of MIT, with an even lower acceptance rate, reportedly of 1 or 2%. After Pichai graduated, his ticket to America came in the form of a master's at Stanford. Going to a top grad school in the States is how many Indians land up in the land of opportunity. They appear to follow this well-trodden path. They did their undergrad at a great school in India, got a master's in the US, where they studied STEM, science, technology, engineering, and mathematics. More than half of all international students in America pursued a STEM degree in the past academic year. American immigration favors people with specialized skills. After Pichai graduated, he went on an H-1B visa to work at consulting firm McKinsey. The H-1B allows American companies to employ foreign workers, many of whom are in IT-related fields. The US government awarded nearly 75% of these visas to Indians in 2020. In comparison, China trailed far behind in second, at 12%. The fact that so many Indians can speak English is a tremendous advantage in the West.
and they're comfortable with American business culture, possibly because it mirrors the thriving IT industry back home in Bangalore, Chennai, and Hyderabad. They're also more likely to want to work overseas. 80% of Chinese international students return to China after graduating, according to China's Ministry of Education. Chinese entrepreneurs prefer starting their own companies at home. Alibaba is known as the Amazon of China. Tencent owns the messaging app WeChat, used by 1.2 billion people. Huawei is one of the giants of the tech industry. China's transition from a manufacturing hub to a tech hotbed has largely been driven by government policy. In the late 70s, Chinese leader Deng Xiaoping encouraged foreign businesses to set up offices in China, which fostered a startup environment. On the other hand, India has a problem of too much talent leaving the country for good. It has the highest number of migrants living abroad, at 17.5 million, according to the UN. And more Indians gave up their passports to become naturalized American citizens in 2020 than the Chinese, continuing the trend from past years. However, the brain drain from India may be starting to recede. An increasing number of homegrown Indian startups are becoming unicorns, meaning the companies are valued at 1 billion or more. The data platform Traction tells Newsthink India created 47 unicorns in 2021, a significant jump from the 17 in 2020, and even less in years past. The tech ecosystem is being bolstered by powerful investment firms such as SoftBank that have been pumping money into Indian startups. But in order to entice more people to remain in their native country, salaries will have to catch up with those in the West. The average American tech worker earns around $98,000 a year, according to the online recruiting platform Dice. Tech salaries in India vary greatly, but the job site Indeed pegs the median salary at $20,000 US, going up to as much as $33,000, which makes them some of the top earners in their country, but still, far less than what they'd make in the States. As salaries grow along with India's startup boom, this could have implications for the number of exceptional individuals desiring to move abroad. तो ये थी कुछ वजूहात जिनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इंडियंस हैं जो कि बहुत जॉइंट टेक कंपनीज़ के सीईओज लग चुके हैं और पाकिस्तानी तो कहीं दूर दूर तक नज़र ही नहीं आता। ये तो काफ़ी दुख की बात है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी कि इंडियंस और चाइनीज़ में ये फ़र्क था कि चाइनीज़ जो हैं वो अपने कंट्री के अंदर ही अपने न्यू स्टार्टअप्स को लॉन्च करते हैं और कोई स्टार्टअप्स है जो कि बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड फेमस होते हैं और पूरी इंडस्ट्री वर्ल्ड की को संभालते हैं, जैसे अलीबाबा हो गया, हुआवे हो गए, काफ़ी इस तरह के जॉइंट्स हैं चाइनीज़। लेकिन जो इंडियंस हैं वो ज़्यादा जॉब को प्रेफर करते हैं और वो बाहर कंट्रीज़ में चले जाते हैं। वो भी शायद इसलिए कि जो इन्होंने वजूहत बताई कि पॉवर्टी बहुत है, जॉब्स की बहुत कमी है और इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो वो इसलिए स्टडी करते हैं, ग्रेजुएशन डिग्री लेते हैं और बाहर तो बैठ जाते हैं। वहाँ पे मास्टर्स जो इन्होंने किया जिस तरह के सुंदर पिचाई ने, तो उन्होंने करके वो फिर उधर जाकर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होती है, तो वहाँ पे उस अपॉर्चुनिटी को जब अवेल करते हैं तो वहाँ पे जब वो मेहनत करते हैं तो उनका वो सिला मिलता है और वो अच्छी पोस्ट पे जा सकते हैं। जैसे कि ट्विटर का जब फाउंडर था वो सीईओशिप से हटा तो उसने एक इंडियन को प्रेफर किया, क्योंकि इंडियन वो ये तो नहीं ना एकदम उठा कर उन्होंने इंडियन को लगा दिया, वो काफ़ी सालों से वहाँ पर उन्होंने मेहनत की होगी, वहाँ पे उन्होंने अपने आप की परफॉर्मेंस बेस्ड के ऊपर आए होंगे, तो इसलिए वो सीईओ बन गए। फाउंडर के बाद पहला सीईओ इंडियन बना, तो ये बहुत एक अच्छी बात थी। लेकिन कि ज़्यादा ज़रूरत ये है कि इंडियंस को कि वो जब जाते हैं तो जब वो स्किल्स हासिल कर लेते हैं, एक लेवल तक पहुंच जाते हैं, तो वापस उनको अपनी कंट्री में आके स्टार्टअप्स को ज्वाइन करना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए वो, और मुझे लगता है कि वो करते भी होंगे और एनजीओज़ के साथ काम करते रहते होंगे अपनी कंट्री को बिल्ड करने के लिए। तो कुछ ना कुछ तो हो रहा है, लेकिन पाकिस्तानी कहीं नहीं है। तो ये पाकिस्तानी अगर कोई वीडियो देख रहा है तो पाकिस्तानियों को चाहिए कुछ सीखें इंडियंस से। इसके अलावा जाने से पहले जैसा कि आपको पता है कि मुनीर लाइव रिएक्शंस को आपने सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और कमेंट्स में आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं डिफरेंट वीडियोस जो कि आप चाहते हैं कि पाकिस्तानी रिएक्शन और रिव्यू देखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके इंस्टाग्राम के डीएम में भी बता सकते हैं, मैं अच्छे जल्दी डीएम देख लेता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में।